अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज हम खेलने जा रहे हैं हॉगवर्ट लेगेसी का आगे का पार्ट 1 जहां हमने छोड़ा था। उसके बाद हम अपना कंटिन्यू करेंगे चैप्टर। चलें स्टार्ट करते हैं अपना गेम। सेलेक्ट कर लेते हैं अपना गेम जो हमने लास्ट टाइम खेला था। चले हम वहीं आ गए हैं जहाँ हमने लास्ट अपना पार्ट छोड़ा था। वहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। ये रूम का थोड़ा सा टूर ले लें हम ज़रा। ग्रिफिंडोर कॉमन रूम। ओके, क्या हम इधर अपने स्पेल का यूज़ कर सकते हैं? चेक करते हैं। अरे नाइस, यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। और अमूमन वरना आम गेम्स में सेफ हाउस जो होता है आपका इस तरह की जगह, वहाँ पे आप अपना वेपन यूज़ नहीं कर पाते थे। यहाँ पे चलो अपना यूज़ तो कर सकते हैं हम। चले बाहर चलते हैं। ऊपर का दिखा रहा है, ऊपर चलते हैं स्ट्रेट से। Now, which way is the common room? ओह, स्टेचू भी हमें सलूट मार रहे हैं। और यहाँ से हम अब नीचे उतरेंगे अपने कॉमन रूम की जानिब। सामने कुछ चीज़ है, उसको देखते हैं। लेवल लॉक्ड। ओके, ये चेस्ट शायद अनलॉक करने के लिए हमें अपना लेवल अप करना पड़ेगा। Must be different starting Hogwarts in your 5th year. लो हम लोग आ गए अपने कॉमन रूम के जाने। यहाँ पे हमें करना है, यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं और काफ़ी कोई खेल रहा है, कोई मैजिक अपना यूज़ कर रहा है। यहाँ हमें करना है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू क्रिसीडा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू गरीत और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ नेविल। चलें देखते हैं ये सारे बंदे किधर हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये क्या है? ओके, एक बंदा तो सामने है और उनसे बात करें ज़रा। It'll be the next butterbeer. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. अच्छा, यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना आई एम शी इज़ माई आंट। अच्छा, दैट मस्ट बी नाइस, दैट मस्ट बी ऑकवर्ड, देन यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। ओह, दैट मस्ट बी राइट। थोड़ा सा नाइस रहने की कोशिश करते हैं। Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well, and she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Still, she means well, and she is incredible powerful witch. She will have your back. What's that in your mug? Do you have a naked for position 2? क्या करें बोलें कि निकल जाओ, चलो टाटा। चलो मग का पूछते हैं। Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there, based on some reactions that may need a bit more work.
चलो सही रहा, अब इनको हम नाइस टू मीट यू करते Well, हैं it was nice meeting और you, आगे Gareth, चलते हैं। and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. चलो एक टास्क तो हो गया, अब दूसरे स्टूडेंट्स को देखते हैं। ये क्या है? She gets bolder every year. ओह, सेब भी खा सकते हैं। Nelly will do anything for attention. If I get caught, I shan't offend you. ये रे दूसरे Still not स्टूडेंट, working. हाँ उनसे बात Ugh. करें। I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? It is true that you are the Professor Fig Portage. Not at all. I study with him. I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Yes, having the spot of trouble. I have mastered the charm using it, but this is proving a bit trickier. I'm sure you will get it. Perhaps you just need a bit more practice. Your casting needs work. A little more practice ought to do it. I practiced all summer. I can cast spells more complicated than this one without speaking. What's so difficult about this one? I'm just going to keep at it. चलो और ज़्यादा बात करते नहीं हैं और आगे चलते हैं। Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. चलो इससे भी हो गई हमारी बात और आखिरी रह गए हैं हमारे नेल। ये देखते हैं हाउसेस प्लेस्ड। इसको हम नहीं खोल सकते क्योंकि रेड आ रहा है, इसका मतलब हमें लेवल अपना अप करना पड़ेगा शायद इसके लिए भी। चलो आखिरी जो बंदा है उससे भी हम बात करें। और वो किधर बैठे हुए हैं? ऊपर चढ़ गए, चढ़ी हुई हैं। ओह ये है, सॉरी। Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nelly, by the way. Nelly Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? No, it is true about the dragon. It's true, it was terrifying. It was nothing I would handle. It's true. I was almost killed. Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. How awful for you. And of course, that poor man from the Ministry. But still, you got to see a dragon. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. Anyway, you are certainly brought some much needed excitement to the Gryffindor and Hogwarts for the matter. What are the people think about my travels here? Not often of height, are you? Have you ever encountered a dragon? चलो इसी से I'd पूछ imagine लेते हैं। most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. चलो आज के लिए इतना ही। इनको भी हम टाटा करते I'm हैं। sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. New Gryffindor. Professor Look, Weasley's वापस waiting चढ़ for you गए। outside the common room.
चलो अब क्या करना है, मीट द प्रोफेसर वेस्ली आउटसाइड द कॉमन रूम। चलो भाई बाहर निकलते हैं इधर से। बाहर जाने के लिए ये रास्ता है, ये अच्छा है, हमें सारे स्टैचू सलूट भी मार रहे हैं साथ साथ। और ये Good हमारे morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. ये अच्छा, प्रोफेसर फॉलो द प्रोफेसर वेस्ली। This way. ये अच्छा है कि किताब आपके पास The जादू से guide will आती है, give you जादू से चली जाती opportunities है। to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. यहाँ जैसे हम लोग स्कूल जाते हुए अपना I बैकपैक में लेके certainly जाते would थे, have appreciated something like the field guide when I was a student. और उसमें किताबें Using the हम guide डालते थे will इतनी भारी also भारी। train you to be alert to हमारे your पास भी मैजिक होता है और surroundings. साइड में रख के Do गुम। keep up. Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it, and we'll see कलेक्ट what द the guide गाइड says. पेज। वो पेंटिंग भी यहाँ पे मूवेबल है, जैसे कि होती है। यहाँ से हम अपना सेलेक्ट करते हैं, कैसे करेंगे? आ जाओ। ओके ओके, याद आ गया। Revelio. आ गया। ये लिखा है प्रोटेक्ट ऑफ पुरफियो। अच्छा, ये उस पर उसके बारे में लिखा हुआ है जो हमने अभी कलेक्ट करा हुआ है। ये कलेक्टेबल आइटम्स है मेरे ख्याल से। यू हैव जस्ट अनलॉक द फील्ड प्रोग्रेस ओवर द कंप्लीटिंग द चैलेंज अपीयर हियर। ओके, ये हमारे साइड चैलेंज है, ये सारे हम यूज़ करते रहेंगे, कलेक्ट करते रहेंगे और हमारी कलेक्शन बढ़ती जाएगी। हमारे पास और भी ऑप्शन आ गए हैं। दिस इज़ द विजिट लेवल XP, अर्न इट फ्रॉम द चैलेंज, इंक्रीज योर लेवल एंड पावर। ओके, ये फिर चूँकि यहाँ पे हमारे पास आ गया है चैलेंज, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक हमने सेलेक्ट किया है तो 1% हो गया हमारा। ये रहा, ठीक हो गया। ओके, एग्जिट। सही। चलो, और भी होंगे तो उसको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। Revelio. Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. देखते हैं ये प्रोफेसर हमें कहाँ लेके जा रही है। यहाँ पे कुछ है एक्टिविटी, एक देखें। लेवल हमारा No भी time नहीं to है waste. लॉक We've खोलने के लिए। classes to attend. चेस 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 चेस।
हमें ये क्लासरूम लेके जा रही हैं जो हमारा क्लास अभी शुरू होनी है. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Okay, ये क्या मिला? You discover a flue flame fast travel point. You can open the map at any time to fast travel to any discover flue flame. Okay. फ्लो फ्लेम इन शॉर्ट ये है कि ये आपको फास्ट ट्रैवलिंग करवा सकती है. अगर आप एक दूसरे कोने पे हैं और आपको दूसरे कोने पे जाना है तो ये आराम से आप इस पर फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं. Hogwarts is divided into two main areas. The left side of the map is where students and professor lives and include the house common room and the great hall. Okay. अच्छा, बस ये है मैप में एक साइड आपका पूरा यूनिवर्सिटी है और दूसरी तरफ ये, अगर आपको याद हो क्विडिच मैच जिसमें ये अपने झाड़ू या बूम पे उड़ के खेलते थे बॉल को पकड़ने के लिए. ओके, अभी हम हैं इस जगह पे. सेलेक्ट द साउथ विंग ऑफ द रीजन. ओके, तो हमें यहाँ से ये सेलेक्ट करना है. जूम इन जूम आउट भी होता है और हमें साउथ विंग सेलेक्ट करना है जो कि ये रहा. ओके, इन दिस व्यू यू कैन सी द फ्लो फ्लेम अवेलेबल इन द रीजन. ग्रीन फ्लो फ्लेम रिप्रेजेंट द फ्लेम you have discovered including your own house common room. ग्रे जो है वो अनडिस्कवर है. ओके, जो ग्रीन फ्लेम है वो हम लोगों ने डिस्कवर कर लिया और जो ग्रे अगर हमें कहीं दिखेगी तो इसका मतलब वो डिस्कवर नहीं है. ओके, द राइट साइड ऑफ द मैप इज वेयर. चलो आगे कंटिन्यू करते हैं. सिलेक्ट लाइब्रेरी कहाँ है? लाइब्रेरी ये रही. चलो चलें. प्रोफेसर वेस्ली अनलॉक द सेंट्रल हॉल. ओके, प्रोफेसर वेस्ली ने यहाँ का जो है फ्लेम हमारे लिए अनलॉक कर दिया है. हमने सिर्फ उसको सेलेक्ट करना है और स्क्वायर बटन दबा के फास्ट ट्रैवल करना है. और ये रहा वो, जैसे आप देख रहे हैं ये रहा ग्रीन फ्लेम. ट्रैवल करते हैं इधर. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. और जैसा आपने देखा You can हम get लोग almost डायरेक्ट पहुंच anywhere गए. in the castle quickly from Central Hall. ये है वो फ्लेम जिसके थ्रू हम लोग इधर आए. चलो, फॉलो द प्रोफेसर वेस्ली. Revelio. देख लें कोई चीज़ तो नहीं है हमारे लिए यहाँ पे Always कनेक्ट something करने वाला. happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. Do you think we'll learn how to brew our Mortentia? Strongest love. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. And I would like to be sure you get the Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Okay, thank you, Professor. Can you tell me more about the charm class? What exactly is defense against the dark art? What's Hogsmeade? चलो यही पूछ लें क्या You होता है. mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. अच्छा, चलो थैंक यू करते हैं और आगे Thank हम you, Professor अपना Weasley. देखते हैं क्या A है. lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that
awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. My suspicion is that there's more to the story than the search for the belonging and the extend the trip up to the castle. There is, in fact, I'm afraid there isn't. चलो हम करते हैं there is in fact. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. चलो इनसे हमारी बात हो गई है और उन्होंने हमें गुड लक कर दिया है और अब प्रोफेसर फिग भी आ गए हैं। तो प्रोफेसर फिग से बात करने से पहले थोड़ा सा 1 मिनट यहाँ का नज़ारा कर लें। ओके, यहाँ पे क्या है? चलो ऐसा तो यहाँ सच कुछ ऐसा नहीं है, तो प्रोफेसर फिग से बात करते हैं। It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Did I hear you, Professor Weasley, talking about the exploring ruins? It was nothing, sir. I hope I didn't say too much. बात तो करी थी, चलो आज ये बोल के देखते हैं। She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. चलो प्रोफेसर से हमारी बात हो गई। अब हमें कहाँ जाना है? यू कैन ट्रैक द अवेलेबल केस फ्रॉम द मैप। ओके, हमारे साइड मिशन आ गए हैं मैप में, हम उनको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। Completing the main quest will further the story, unlock the new future and grant XP। वही बात थी, साथ में साइड हम लोग कोई अगर करते रहते हैं साइड मिशन जो हैं, तो हमें मेन उसमें स्टोरी में भी हेल्प करेगी और हमारे अपग्रेड्स में भी करेगी। जैसे कि हम वो चेस अनलॉक नहीं कर पा रहे थे, तो उसके लिए हमें लेवल अप करना पड़ेगा। Some quests are locked by spell and all the level requirement. In this case, you will need to
be the required level and or have the required spell to activate the quest. Okay. Now the spell can be earned by the completing the professor assignment or as a quest reward. ओके सिंपली बस ये है कि हमारे पास जो स्पेल नहीं होगा हम वो नहीं कर पाएंगे और उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा या तो क्लासेस से या तो जो हमें असाइनमेंट मिले या उससे रिवॉर्ड मिले। तो अभी हम चलते हैं चार्म्स क्लास पे या डिफेंस अगेंस्ट अ डार्क आर्ट क्लास। तो हम चलते हैं करीब में यही है चार्म्स क्लास, तो हम पहले इधर चलते हैं फिर उधर चलेंगे। तो ट्रैक करते हैं। The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. चलो यहाँ पे हमारी इनसे बात कंप्लीट हो गई है और हमें एक और हमारा चैलेंज जो है अनलॉक हो गया है। उसको भी हम चेक कर सकते हैं कि किधर है। और अब चलते हैं अपने हम चार्म क्लास पे। ये आपको बॉटम लेफ्ट में आपको मैप दिख रहा होगा, यहाँ पे ये डॉट्स बने हुए हैं, इनको फॉलो करते हुए हमें अपनी क्लास की तरफ जाना है। और ये जा रही है इस दरवाजे के थ्रू। लोडिंग हो रहा है। ओके और ये खुल गया। ओके यहाँ पे भी नहीं है, तो कोई आउटसाइड कोई एरिया है। Revelio. चेक कर लेते हैं कोई चेस्ट वेस्ट तो नहीं है इधर। कॉरिडोर से होते हुए हम लोग इस दरवाजे से दोबारा एंटर होने वाले हैं। डार्क अगेंस्ट डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट। ओके टावर का नाम है। और यहाँ पे भी फ्लेम हमने अनलॉक कर ली। यहाँ पे भी अब हम फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं। और देखते हैं अब कहाँ जाना है। हमारी क्लास होगी गो टू द चार्म क्लास। तो चार्म क्लास हमारी है ऊपर को। ओके कहाँ इतनी दूर रखी है, कोई लिफ्ट विफ्ट लगा लेते हैं यहाँ पे। इतना मैजिक सिखा रहे हैं। Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Here. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and
take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. ये हमें एक स्पेल मिला है, क्या नाम है इसका? SEO। ओके, देखते हैं ये क्या करता है। तो हम शुरू करते हैं वही अपने पुराने से बात करने करते x x x x और ये हमारा अनलॉक हो गया स्पेल Accio. Accio। That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. चलो कहीं बाहर लेके जा रहे हैं प्रोफेसर साहब, वहाँ पे ये स्पेल हम शायद यूज़ करेंगे। देखते हैं कहाँ जाते हैं बाहर। Players amongst us would agree, So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more. Splendid! Don't lose your composure. असली लाइफ में भी हमारे पास जादू होता है, हम यूं खाली घुमाते और अपना काम सारा कर लेते हैं। That's it. इसको नीचे गिराना है? नहीं, ऊपर ही रहना था। Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? 30, 20 लिखा हुआ है। और हम लोग अपना शुरू करते हैं फिर। अच्छा, पोजीशन में आना है। Let us see this. और पहले उसकी बारी है। ओके। Yes. 50 पॉइंट। ओके, हरी साहब आपका है। Accio. ओके 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 30। ओके, Very और good. bet। Here we go. वो सही है, एक्सपर्ट है भाई। That is how it's सारे done. उसके पॉइंट 50 पे जा रहे हैं। और ये हमारा ये वाला जाएगा 50 पे। ये आ गया 50 पे। यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आ गया। Quite impressive. Watch this. 30। There we go. Accio. ओके, ये तो 50 में लाके रहेंगे। और बस 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 बस। Happens to the best of us. और वो हमारी ओपोनेंट जीत गई इसी बात पे। Let us make this a bit more interesting, shall we? ओह, दोबारा। अच्छा, I think we are हमारे well बीच past में interesting at this point. हडल्स भी आ गई हैं। I'll say.
Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp. इस दफ़ा कोशिश करेंगे हमारे सारा स्कोर 50 पे आए और ये हमने सेलेक्ट किया है और यहाँ छोड़ दिया और ये नीचे गिर गया शिट Not to worry. Let us see this. हम थोड़ा सा जल्दी छोड़ रहे हैं और तेज़ी से बुला रहे हैं कोशिश करते हैं कि सही टाइम पे बुला लें इसको और यहाँ पे छोड़ दें और ये 50 यस Splendid. Watch this. There we go. अभी भी अगर हम 50 पे ले आते हैं तो 100 पॉइंट से 10 पॉइंट आ जाएंगे बस 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 Do not be discouraged. क्या ये रीमैच होता है Very good, both of you. Well done. चलो स्पेल यूज़ करना तो आ गया अब थोड़ा सा स्पीड का थोड़ा सा इशू था अगली दफ़ा कभी चैलेंज मिला तो हम इसको इंशाल्लाह हरा के दिखाएंगे Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Took week for me to get anything right when I transferred here. I get easier, I promise. I'm holding my own. I'm glad you understand. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. How big is Uganda? What does Uganda look like? Is magic the same at Uganda? तो हम मैजिक की क्लासेस में हैं तो हम मैजिक के हवाले से ही पूछ लेते हैं This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. Mostly yes, but I did have to learn how to use the wand when I arrived here. Hardly anyone who can't use one. Sure, the magic is weaker. That's incredible. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. चलो और आगे सवाल नहीं करते और इनको थैंक यू करके अल्लाह हाफिज करते हैं It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use चलो हमारी ये क्लास हो गई प्रोफेसर you're साहब so से inclined. बात A word, करके इनको if ये you शायद would, अलविदा ही कहना है You'd be using it on clothing to be You precise, wanted to Bessie. speak with me, Professor? You know it won't I work did. with humans. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now,
Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. मैं कुछ दिन हुए नहीं क्या मैं हमारे लिए एग्जाम तैयार हो रहा है. चलो. Revelio. हाँ, कुछ यहाँ पे कलेक्ट करने का आइटम नहीं है और यहाँ पे कहीं फ्लेम शो हो रही है, वो शायद ऊपर ही हो रही होगी. ओके, यहाँ पे क्या बता रहा है? अच्छा, यहाँ पे चेक कर सकते हैं. ज़रा चेक कर ले अपने गेस्ट. अटेंड द क्लास, अटेंड द. ओके, दूसरे हम करने जाते हैं अटेंड द डिफेंस अगेंस्ट द कॉस्ट. ओके, तो इसके लिए हम मैप पे सेलेक्ट कर लेते हैं. मैप हम निकालते हैं. मैप का है हमारा. ओके, मैप पे हम सेलेक्ट करते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं और ये रहा हमारा डिफेंस अगेंस्ट अ डार्क क्लास. और हम इसको ट्रैक करते हैं और बैक करके इसकी तरफ चलते हैं. कलेक्टेबल्स आइटम भी आ गए हमारे पास, जिसमें से हमने एक आइटम कलेक्ट किया अभी तक. नहीं, 9 भी कर चुके हैं. ओके, काफ़ी नीचे हैं. ये क्या है? अच्छा, ये जो हमने तस्वीर कलेक्ट करी थी. और कुछ है हमारे पास कलेक्ट हुआ हुआ? कुछ भी नहीं है. ओके, इसी तरह यहाँ पे बहुत से कलेक्टेबल आइटम्स हैं. चलो आहिस्ता आहिस्ता मिलते जाएंगे तो हम करते जाएंगे. चैलेंजेस हैं हमारे पास. कम्बर्ड है, क्वेस्ट है, एक्सप्लोरेशन है, ये गाइड है, रूम ऑफ रिक्वायरमेंट है. अभी तक हमारे पास दो चीज़ें ओपन हैं, बाकी चीज़ें अभी खुली नहीं है. जैसे खुलेगी फिर हम उसको भी इंशाल्लाह करते रहेंगे और आगे आपको लोगों को भी दिखाते रहेंगे. चलो अभी चलते हैं अपनी दूसरी क्लास की जानिब, जो कि है आपकी अल्लाह भला करे नीचे शो कर रही है. मतलब हमें यहाँ से क्लासरूम से पहले तो बाहर जाना पड़ेगा और ये मेरे ख्याल से दरवाज़ा है बाहर जाने का. Hello there. You're the new student, aren't you? चलो इससे बात करते हैं. Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. That's kind of you to say. Wasn't too challenging a lesson? Wasn't too challenging a lesson करते हैं. Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. चलो अपनी तरफ से बात करके चली गई है. आगे चेक करते हैं हमें कहाँ. अच्छा, पीछे जाना है. ये रहा हमारा रास्ता. यहाँ से नीचे चलेंगे हम और अभी भी नीचे है. तो अब सबसे पहले हम लोग अगर ये डार्क डिफेंस कर लेते शायद वो करीब पड़ती है हमें. चलो जो हुआ अच्छा के लिए होता है. देखते हैं. ये नीचे है क्लास, बिल्कुल ही नीचे है. तो और ये हम अपने डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट क्लास की तरफ आ गए. ओके, यहाँ पे कहीं फ्लेम है और ये फ्लेम यहाँ का जल गया है. चलो अब हम अपना दूसरा स्पेल सीखने जा रहे हैं. देखते हैं यहाँ क्या सीखते हैं और आगे फिर हमारे पास क्या मिशंस आते हैं. Is that all you've got? Yeah. Bombard! Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull.
It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. चलो अब लेवियोसो स्पेल सीखते हैं उसी तरह जैसे हमने पिछले और स्पेल सीखे थे. स्टार्ट करते हैं फिर. और ये पहुंच गए हम लोग अपना लेवियोसो. Levioso. स्पेल सीखना अभी तो आसान है, आगे जाके देखते हैं क्या होता है. हमारे पास शायद ये टारगेट रख दिया और इसको शायद हमें अटैक करना है. देखते हैं क्या देते हैं हमें चैलेंज. Let us begin with the basic cast. अब बेसिक कास्ट करने में तो हम चैंपियन हैं. हम पहले भी स्टैचू से लड़ चुके हैं. See how the dummy deflected your cast. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, शील्ड की वजह a से surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. शील्ड की वजह से हम उसको अपना स्पेल नहीं यूज कर पा रहे थे. इसके लिए हमें लेवियोसो स्पेल यूज करना है कि उसकी शील्ड जो है वो. Levioso. Good. Now the basic cast. और फिर बाकी आप. Well done. बेहतरीन. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. ये अच्छा है, एक स्पेल सीखा नहीं और ड्यूल शुरू हो गया. Levioso. This should be easy. Lucky. Nothing lucky about it. Good form. I know. Levioso. Protego. You're good. How perceptive. Thank you. Rather good at this, aren't you? I know. This can't be your first. और एक बार गिर गया. Let's just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you get. उससे तो काफी आसान चैलेंज था क्योंकि हमें लड़ने की प्रैक्टिस थी और उसकी नहीं थी थोड़ी. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Heckard. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Sebastian. This is not Sebastian. Sebastian, किधर हो? Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice.
Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've had my share of wand combat. I was never used my wand in combat. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Sound suspicious. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck, or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. चलो यहाँ हमारी क्लास ख़त्म हुई, हमारे सारे ये जो हैं कंप्लीट हुए। अब देखते हैं अगला हमारे पास क्या टास्क आया है। ओके, अगला टास्क हमारा है अक्रॉस द बॉन्ड राउंड 1। ये क्या होता है? टॉक टू द लुकन ब्रेटल्ड बाय। ओके, इनको सब ढूंढने के किधर है ये? ओके, यहाँ से हम अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। वेजली क्लास आफ्टर। ओके, मैप किधर है? मैप से हम ओके, यहाँ हमें जाना है। ये क्या है? वेस्टली आफ्टर क्लास। हम इधर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। और यहाँ पे हमारा लेवल भी आ गया है, लेवल 2 हो गए हैं हम ये करने के बाद। चलो मिलते हैं अपने बाकी टास्क कंप्लीट करने के लिए, और वो है नीचे। नीचे हम जाएंगे। अभी तक अच्छा चल रहा है, बेसिक चल रहा है, अभी स्पेल सीख रहे हैं। आगे जाके देखते हैं क्या क्या आता है मुश्किलात इनको इस गेम में। 142 अभी तक गेम जो है आगे पीछे जो ग्राफिक्स हैं इसकी सब अच्छी लग रही हैं। स्टोरी लाइन भी अच्छी चल रही है अभी तक। स्पेल सीखना भी आसान है। हो सकता है वो आसान स्पेल हो तो इसलिए हमें सीखने में आसानी हो रही हो। आगे जाके हो सकता है जो इनके डार्क स्पेल होते हैं किसी को मारने के लिए, हो सकता है वो मुश्किल हो। ये अभी तक हमारा लॉक है लेवल। ओके, हमें मिल गया एक चीज़ और कलेक्टेबल आइटम था। और यहाँ पे कुछ हमें दिख रहा है। अच्छा, वो क्रॉस उसके। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहाँ है ये? ऊपर। अभी भी ऊपर है, मतलब उन्होंने टॉप का फ्लोर ख़रीद के रख लिया अपने लिए कि स्टूडेंट वहाँ भागते हुए आते रहे। और फ्लेम थी तो यहाँ से हम डायरेक्ट ट्रैवल कर लेते हैं। अभी भी नहीं आया, पता नहीं कहाँ बैठी हैं ये खातून साहिबा। इतने बड़े में इंस्ट्रक्शन नहीं कहीं लिखी हुई कौन सी जगह से कहाँ से जाना है। ये है कोड यार्ड, और इधर भी हमें फ्लेम अनलॉक हुआ और फ्लेम हमारा है किधर? ओके, ये रहा साहे। इधर भी कुछ शो कर रहा है।
ये क्या आइटम रखा हुआ है? ओह कैट, हम इससे ऐसा कुछ कर सकते हैं? बस भाई ये भी दिन बन जाएगी, छोड़ दो इसको। चलो प्रोफेसर, ये रहा, यहाँ से हम अपना फ्लेम। ओके चलो ये आसान है, सारे फ्लेम जो है फौरन फौरन मिल रहा है। What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Wasn't Professor Fig said anything? No, Professor. Would reckon a good deal more to you travel here than what you told me, isn't you? Wasn't Professor Fig said anything? Oh no, Professor. Professor Fig को हम बजाने की कोशिश करते हैं भी आगे. Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. In this regard, I will ask your professor to help hasten your progress with some extra assignment. ये सही है भाई. What more work? Professor Ronan mentioned it. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. You are managed your class well with the borrowed wand, but you will find the magic you cast with your own wand to be far superior. I am ready to go. What more can you tell me about the potion shop? It's a what is spellcraft? So that's really spellcraft का पूछते हैं. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. I am ready to go. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. How about Nettie? Sebastian, I think. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. तो हमें जाके प्रोफेसर रोनिन का असाइनमेंट कंप्लीट करना है. फिर हमें जो है ब्रेकफास्ट मिलेगा और एक बूम मिलेगा. क्या बोल रहे हैं? स्पीक द प्रोफेसर रूम टू रिसीव योर फर्स्ट असाइनमेंट. असाइनमेंट डाटा है
ओके, वो वहाँ जाके हमें सेलेक्ट करना है और देखना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम अगली एपिसोड में देखेंगे प्रोफेसर नून हमें क्या वो टास्क देते हैं, असाइनमेंट देते हैं। और अब हम आज की वीडियो बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला पार्ट फिर हम अगले इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए लाएंगे। बस आपसे एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपको अच्छा लगा, क्या क्या अच्छा नहीं लगा। इंशाल्लाह उस पर भी कोशिश करेंगे, उसको बेहतर करेंगे हम इंशाल्लाह आपके लिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।